बहुत वक्त है. Ghanshyam Tiwari, is there a threat to the SP-RLD alliance? Well, good evening to you, the viewers, and my fellow co-panelists, and a very happy greeting to the viewers and the entire nation on the Republic Day. May our collective efforts make the nation prosperous and harmonious. As far as this situation is concerned, this is a situation where an applicant to an exam is saying that give me grace marks, is trying to cheat even before the exam has started. So this is the reality of Bharatiya Janata Party. On 4th October 2020, the Yogi government of Bharatiya Janata Party lathi charged Jayant Chaudhary. Not one person spoke in his favor. This is a government that lathi charges students even till date. So on one end, the situation in Uttar Pradesh is continuously slipping out of BJP's hand. The route is written. When they lathi charge students, they continuously deceive the farmers. The agenda of hate has failed. Yogi Adityanath has been shunted to Gorakhpur. They don't have an alternate agenda to offer. So when BJP fails on hate, they resort to trade. So what Amit Shah ji has initiated today is an example of trade. My final point is, this is incidental that the meeting is happening at a member of parliament's place who exactly 2 years back was cautioned by Election Commission on hate speech. So it is shocking and it's tragic for the country that the Home Minister of India is planning a treaty of hate and an agenda of hate when the entire state of Uttar Pradesh is united against hate and united against Bharatiya Janata Party. Let me go across to Radhika Ramaseshan. Radhika, is Amit Shah's invitation and the fact that this information was made public creates some amount of confusion on the ground for the SP-RLD alliance among the voters? Yeah, I mean, that was my instant reaction, that this is intended to confuse the voters, you know, that you are trying to show as though you're sending signals to the RLD, which is, by the way, emerging as a factor in Western UP, at least for the first two phases. So, so these are the games which parties normally play during an election. Now, we have to see what impact it has on the voters. Now, some voters might think that RL kind of both ways. I mean, it is going with the Samajwadi Party as an ally. Now, post-poll, and even I would like to say that, post-poll, I cannot say what will happen. If the RLD comes with a sizable number of seats, and in case, and this is full of ifs and buts, by the way, and in case the BJP falls a bit short of a majority, then who knows what will happen. But right now, I do not see the SP and the RLD parting ways before the elections. I mean, it has solidified as an alliance. RLD was an ally of the SP. It was part of the Mahagathbandhan in 2019, which didn't have much of an impact because UP was awash with the Modi wave. This time, it could be a different ball game because let's not forget the farmers' protests, like they didn't happen 4 years ago or something. It's too fresh in people's memories. And it is going to have some kind of impact, maybe a mixed impact. Maybe there are Jats who will still vote BJP because BJP is playing the Hindu card very deliberately and very conscientiously, if I may say so, in for this phase. So maybe some Jats, some Hindus, some Jats, let me stick to the Jats, may get swayed by the Hindu rhetoric. We will have to see. But on the other hand, this farmers' protest has upset the BJP's apple cart quite a bit. All right. I'll go to Ghanshyam Tiwari because he was raising his hand. Very quickly, Ghanshyam Tiwari, did you want to respond to something that Radhika said? Yes, very good point. I think one thing is obvious to everyone here, that if you are a voter and you are contesting where BJP is pitted against RLD, you are already, what is the face that the BJP candidate has anymore? In any case, BJP candidates are being chased away by people in their own villages. And furthermore, when Amit Shah starts batting for the SP-RLD alliance, the BJP candidate has lost it even before the battle started. Anila Singh, you know, the point that is being made here, I think by Ghanshyam Tiwari and all the other RLD leaders as well we have spoken to, is that this last minute overture by Amit Shah is a clear indication that the BJP is nervous about its stronghold of West UP. How would you respond to that?
No, not at all. Bharatiya Janata Party is not at all nervous, and we are very confident that people of Western Uttar Pradesh, they are going to vote for Bharatiya Janata Party. And if I particularly talk about Jats, then definitely in 2019, Jats voted for us. Almost 91% Jats, they voted for Bharatiya Janata Party, and again they are going to vote for us. One of the biggest reasons here, I'll tell you. Number one, like every time they talk about farmers' agitation, now there is no farmers' agitation. The 3 laws, they have been taken back, they have been repealed. अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश यानी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर अपराध और अपराधीकरण से लोग बेहद परेशान थे। बहु बेटियां जो है अपने घर से निकल नहीं पाती थी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इतना खराब था, सड़कों में 1-1 फुट के गड्ढे हुआ करते थे। आज यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया गया है, अपराधी थर-थर कांपते हैं, बहु बेटियां सुरक्षित हैं, स्कूल में जाती हैं, कॉलेजेस में जाती हैं, लोग अपने इंडस्ट्रीज को लगा पा रहे हैं। Seeing all this thing, अनिला सिंह, इसीलिए तो आरएलडी सवाल उठा रही है, इसीलिए आरएलडी सवाल उठा रही है कि हमें फिर क्यों ओवरचर्स दिए जा रहे हैं अगर बीजेपी अपने आप में इतनी कॉन्फिडेंट है। संदीप चौधरी के पास जाना चाहूंगी। संदीप चौधरी, मैं एक चीज जोड़ दूं, आप संदीप जी के पास जाइएगा, बिल्कुल जाइएगा। देखिए, इसको गलत तरीके से ना देखें। मैंने ये कहा था ना, ये गुड जेस्चर है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो बीजेपी को समझ में आता है कि आरएलडी क्या है। चौधरी चरण सिंह जी ने ये राजनीतिक दल शुरू किया था किसानों का, क्योंकि किसान जो है किसी भी जाति और धर्म से आते थे, वो चौधरी चरण सिंह जी के साथ जुड़ जाते थे। ठीक है। वो इतनी बड़ी शख्सियत थी। फिर चौधरी अजीत सिंह ने धीरे धीरे उसको एक जाट कम्युनिटी का बना दिया, और आज जब जयंत चौधरी जी ने इसकी कमान संभाली है, तो वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं क्या कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा जाटों का नुकसान किया। इसलिए बोला है कि भाई अभी टिकट बंटवारे में भी आपने देख लिया कि इनको टिकट बंटवारे में भी कहाँ छोड़ा हुआ। इन्होंने 4 जाटों को टिकट दिए, हमने 17 जाटों को टिकट दिए हैं। तो जैन जी को भी समझ में आ रहा है, पता नहीं कितने दिन इनकी समाजवादी पार्टी के साथ दाल गली। अब संदीप चौधरी के पास जाती हूँ। संदीप चौधरी, अगर 2017 से आज की सिचुएशन कंपेयर की जाए, मुझे याद है कि 3 दिन पहले चुनाव से 11 फरवरी को पहला फेज चुनाव का था, 8 फरवरी को वो गए थे। उन्होंने वहां पर बोला था कि जाटों की जो भी डिमांड्स हैं वो पूरी की जाएंगी, और रातों रात वहां पर वेस्ट यूपी में सिचुएशन बदल गई थी। आपको लगता है उसका रिपीट हो सकता है इस बार? देखिए मैडम, मैं आपको क्लियर कर दूं, आपने आज तक के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के किसी इतने बड़े नेता को किसी एक कम्युनिटी को इनवाइट करते हुए नहीं देखा होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को और इनकी टॉप लीडरशिप को ये चीज का एहसास हो चुका है कि हमने जाटों के साथ गलत किया है, किसानों के साथ गलत किया। 2017 का एग्जाम्पल दिया, तब भी रूठे हुए थे जाट, और 3 दिन पहले अमित शाह गए और बिल्कुल ओवरनाइट चेंज हो गया था। देखिए, आपको बताऊं, वो चीजें सब झूठ निकली। वो जो बातें थी, जाट आरक्षण को लेके भी इन्होंने बुलाया था, वो मीठी गोली ये दे करके लोगों को भेज देते हैं। और आज की तारीख में मसला केवल जाटों का नहीं है, मसला किसान वर्ग का है। जाट भी किसान वर्ग का एक हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा आप कह सकते हो। और किसान वर्ग पूरा नाराज है, मजदूर पूरा नाराज है, युवा पूरा नाराज है। और हम लोग इसलिए नाराज है कि मेरा मामा फोर्स में है, मेरा भाई एयरफोर्स में है। जब उनके साथ कोई हादसा हो जाता है, उनके साथ काम करने वाला मुसलमान भाई उनको अपना ब्लड देता है। लेकिन ये आज हिंदू और मुसलमान को अलग करना चाहते हैं। किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं? मेरे पास आखिरी 1 मिनट बचा है, 30 सेकंड मुझे घनश्याम तिवारी और राधिका रामसेशन को देने दीजिए। घनश्याम तिवारी, हाउ विल द I'll come to you, ma'am. How will the SP-RLD arrest any damage or perceived damage that you believe has happened today because of this meeting? Well, the message is already out that BJP is losing, and Amit Shah ji is engaging in a trade to save face. So SP-RLD will further double down on this message that in this election, harmony is the issue, hate is getting defeated, unemployment is an issue, those who lathi charge the youth will be defeated.